Assalamu alaikum friends, and today in this video I'll be just talking about the themes of Waiting for Godot. It's written by Samuel Beckett. It is a play. It is also known to be the best absurd theater play. So I have categorized the themes into major and minor themes of the play. So let's begin with it. So the first and the very distinct theme of Waiting for Godot is the absurdity of human existence. Okay? The next we have is the search for purpose and meaning. The third is pain of loneliness and isolation. Fourth is the nature of language and communication. So from 1 to 4, these are the major themes of Waiting for Godot by Samuel Beckett, and from 5th to 8 we got minor themes such as decay of the society, the importance of memory, the inevitability of death, and the illusion of freedom. So let's elaborate each theme in detail. So whenever we talk about the absurdity of human existence, we are just talking about the play itself. Absurdity इसीलिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बना दी गई थी इस प्ले में क्योंकि रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स, कांस्टेंट एक ही प्लॉट था, एक ही सेटिंग थी, दो लोग थे, व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगॉन, जो कि एक दूसरे से बात करते थे, बात भी कुछ नहीं होती थी करने के लिए, कभी कोई दरख्त पे लटकता था, कभी कोई क्या करता था, कभी कोई ज़मीन पे लेटा होता था, एंड दे यूज्ड टू से टू ईच अदर लेट्स गो, एंड देन दे नेवर इवन यूज्ड टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस, फ्रॉम दैट सेटिंग. तो इसीलिए रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स था, वेटिंग फॉर समबडी, एंड दैट वाज डेफिनेटली वेटिंग फॉर गोडो. इवन टिल नाउ हम लोग अपनी लाइफ्स में एक इनहेरेंट मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं, बट वी समटाइम्स वी डू नॉट गेट द आंसर फ्रॉम गॉड, और हम लोग कभी बहुत वियर्ड फील कर रहे होते हैं, बेचैन फील कर रहे होते हैं. वी फील लाइक दिस लाइफ हैज़ नो मीनिंग इटसेल्फ. ये दुनिया ऐसे भी ख़त्म हो जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. लेकिन जिस तरह ये लोग वेट कर रहे होते हैं गोडो के लिए, एंड दे डू नॉट हैव एनी पर्पस, ठीक है, इन लाइफ, तो इसीलिए एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को कहा गया है इस प्ले में. एंड बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स एस्ट्रोकॉन एंड व्लादिमीर, they are waiting for Godot, and therefore even the play is named as Waiting for Godot, but it is a clear sign that Godot will never come, and they even say that nothing can be done, but still they wait for a very long time throughout the play. Therefore an unavoidable conclusion is that human existence is itself is absurd. This play is also known as a tragic comedy, also known as tragicomedy. Therefore, even Samuel Beckett emphasizes on the existential crisis as when people do not have a certain purpose in life to follow, and they are confused over everything, over their lives, over their existence, over their purpose in life, and therefore they are waiting for Godot, but it has not been evidently shown that what do they want to ask Godot and about what. So moving on to another theme, which is search for meaning and purpose in life. So in the play, the characters are constantly searching for Godot, and Godot represents God or any superior being. So in the act 1, they remember making a kind of prayer to Godot, expecting it to give them some direction, and they decide it is safer to wait and see what Godot says rather than dying by hanging themselves on the tree. So, anyhow, Godot, however, never comes, and represents the futility or the folly of such a search of meaning is inherently meaningless existence. So there is the term existential crisis in it. So the word futility means fruitlessness in life, as their lives are not vibrant enough to live. So the next we have is the pain of loneliness and isolation. Both of the characters are isolated. They are isolated within the same setting, or there is the same plot. Both of them are waiting for the Godot itself. And as the characters are isolated from the rest of the world and are forced to rely on each other, whenever Astrogon or Vladimir, both of them or either one of them says that they are leaving, so they do not leave, or either the other does not allow. Both of the characters are having no social life. They are mentally so drained and they are isolated. Even in one of the act, I guess Astrogon goes and sleeps somewhere
And then later on, Vladimir asks him, "Where were you all of the night?" So both of them are relying on each other, and no one leaves that setting. So if we talk about the isolation in life, our lives are isolated in itself. If we take our lives, there's no real meaning or purpose until and unless we do not give meaning to our lives. इवन अगर हम लोग अपनी लाइफ को भी देखते हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन ईदर वी आर इन आवर रूम सिटिंग और लाइंग ऑन बेड डूइंग नथिंग एट ऑल। हमारी लाइफ्स का भी कोई मीनिंग ना होता अगर हम लोग एस्ट्रोगॉन और व्लादिमीर की तरह एक ही जगह पे बैठे रहते, एक चीज़ का इंतज़ार करते अपने। वो है ना, एक बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग मेंटली बहुत ड्रेन्ड हो जाते हैं, स्पिरिचुअल आइसोलेशन में होते हैं, वी आर प्रेइंग टू गॉड एंड डूइंग नथिंग एट ऑल, कि बस ये काम हो जाए और ये काम हो जाए। तो देयर इज़ इवन अ बॉय जो कि एक मैसेज लाता है गोडो की तरफ से कि गोडो कल आएगा, या यू पीपल कीप ऑन वेटिंग एंड गोडो विल बी कमिंग टुमारो। तो इसी तरह हम लोग इफ़ इन केस एक सुपीरियर बीइंग है और इफ़ देयर्स गॉड, तो हम किसी को मैसेंजर के थ्रू हम किसी पे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते उसको कि वो हमारा मैसेज लेके जाए अल्लाह की तरफ या गॉड की तरफ, ठीक है। तो वी नीड टू कनेक्ट आवर सेल्व्स, आवर सोल्स टू अल्लाह, and therefore we are lacking behind in life, whether it's loneliness, isolation, mental illness, social. Basically, there is one of the word existential crisis in the play, that they are lacking purpose in life. The last main theme is the nature of language and communication. तो इस टाइम पे वेटिंग फॉर गोडो में सैमुअल बेकेट ने ऐसी लैंग्वेज यूज़ की है जिसकी आगे से रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, जिसका फर्दर देयर इज़ नो सोल्यूशन टू इट। मतलब उन वर्ड्स की जो है इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है। ये लोग एक ही बात करते रहते हैं कि ओके वी हैव दिस प्रॉब्लम, बट दे डू नॉट सीक फॉर द सोल्यूशन। एस्ट्रोगॉन और व्लादिमीर की बात करें, दे डू नॉट सीक फॉर द सोल्यूशन एंड कंटिन्यूसली दे आर कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर एंड नॉट इवन अलाउिंग ईच अदर टू गो फार बियॉन्ड। अच्छा, एक जगह पे ऐसा होता है कि एस्ट्रोगॉन जो है एक जगह पे सो रहा होता है, सारी रात वो गुजार लेता है और बाद में उससे व्लादिमीर, या आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, कि व्लादिमीर एक जगह पे दूर जाके सो जाता है, सारी रात गुजार लेता है और बाद में एस्ट्रोगॉन उससे पूछता है कि वेयर वर यू, सो ही सिंपली सेज विदाउट इवन पॉइंटिंग आउट दी लोकेशन के ओके आई वॉज देयर स्लीपिंग। मतलब इतनी होपलेसनेस है लाइफ में कि इवन द लैंग्वेज इटसेल्फ इज़ दी मेटाफर फॉर होपलेसनेस। क्योंकि जब कभी हम लोग बहुत थके होते हैं, बेजार होते हैं लाइफ से, तो हम क्या करते हैं कि हम में कोई हिम्मत नहीं होती बात करने की, एक बात को एक्सप्लेन करने की हिम्मत नहीं होती, एंड वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन टॉकिंग, सो वी सिंपली से दैट ओके ओके ये हुआ था, एंड विदाउट explaining it. As we are done with the major themes, so let's begin with the minor ones. So the minor themes are the decay of the society, importance of memory, the inevitability of death, and illusion of freedom. Okay, so talking about the very first minor theme, that is the decay of society. So the play highlights the societal decay and the decline of human values. अब ये जो प्ले है वेटिंग फॉर गोडो बाय सैमुअल बेकेट, ये वर्ल्ड वॉर के बाद लिखा गया था और हर जगह पे डिस्ट्रक्शन बताई गई थी, वेदर इट वाज अबाउट ह्यूमन वैल्यूज़ और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी। Everybody is so frustrated that they don't even care about another person, and there is lack of individualism because both of the characters, Astrogon and Vladimir, they both are dependent or codependent on each other. So absurdist play commented on the failure of humanity in the society of the time to overcome absurdity through their everyday behavior and actions. Okay, so now in some places it has been mentioned that waiting for Godot is not a tragedy because the main reason for the suffering of characters is not some great catastrophe,
ठीक है, कोई ग्रेट कैटास्ट्रॉफी या डिस्ट्रक्शन की वजह से इन लोगों के बिहेवियर ऐसे नहीं थे, बट इट्स बिकॉज द सेम कांस्टेंट रूटीन दैट टायर्स यू सो मच that you people are even not even interested in anything, whether it's even your life. Okay, so now it has been said that the importance of memory. So the characters constantly reminiscence about their past experiences, suggesting the significance of memory in shaping identity and existence. तो अभी वेटिंग फॉर गोडो में ये जो कैरेक्टर्स हैं व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगॉन, तो एस्ट्रोगॉन का तो ये सीन है कि उसको सब कुछ भूल जाता है, इवन उसको एक्ट 1 भी इनसे भूला होता है। जब एक्ट 2 में आते हैं तो इनको कोई भी बातें एक्ट 1 की याद नहीं होती। इस तरह इनको ये भी याद नहीं होता कि दे वर कंटेम्पलेटिंग वाइल हैंगिंग देमसेल्व्स ऑन दैट लोन ट्री, जो कि बैरन ट्री होता है, उस पर ये लोग ख़ुद को हैंग करते हैं इन ऑर्डर टू पास द टाइम। तो इनको ये इंसिडेंट भी भूला होता है, तो इनको डे टू डे में अपनी जितनी भी कॉन्वर्सेशंस होती हैं इनसे भूल जाते हैं। बट द ओनली थिंग दे रिमेंबर इज़ दैट दे आर वेटिंग फॉर गोडो। So the third minor theme says that the inevitability of death. So it says that the play portrays death as an inevitable reality, and the characters are constantly reminded of their own mortality. So now it says that आप कुछ भी कर लो, whether you wait for Godot or whatever happens, you will die one day, and death means that you'll escape. Death is the ultimate escape from all the sufferings. So none of the characters in Waiting for Godot were shy from the fact that death is inevitable, and in fact death comes at a time of a solution for the inanity of daily life. मतलब हम डेली लाइफ में जितनी भी सफरिंग्स हैं, डेथ जो है वो एक सोल्यूशन है हमारी ज़िंदगी में। द मेन कैरेक्टर कॉन्टेम्पलेट्स सुसाइड एज दो इट वर एज हार्मलेस एज अ वॉक टू द ग्रॉसरी स्टोर। ये लोग ऐसे कहते हैं कि डेथ जो है हार्मलेस नहीं होता, probably because there's nothing in their lives worth sticking around for anything. Now if you people remember, Vladimir and Astragon they don't do anything in their lives. When there's something worth in the life doing, so then the death would be something regretful. But then they ultimately do not commit suicide because they claim not to have the means, but because they are uncertain of the result of their attempt. अब इन क्योंकि because they have one certain aim in their lives, and that is to wait for Godot. But apart from that, they do not have any other aim, and they say that death is the ultimate reality. Therefore, as they are waiting for Godot, so they decide on no action to take at all on this matter. But though they hang themselves on the tree, but just for the sake of erections. Therefore, they say that death is a way of escape, and if you die, you escape of life and all the suffering and the negatives of life. So the last theme we have is the illusion of freedom. अब जो है illusion का मतलब है something that is mirage, ठीक है, and freedom is when you are free. So both of these characters aren't free as they are waiting for Godot. And if we take Pozo and Lucky, पोजो और लकी का जो रिलेशनशिप है वो मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप है, एज पोजो इज़ द मास्टर एंड लकी इज़ द स्लेव। जब एक्ट 2 में पोजो की आई साइड चली जाती है तो स्टिल लकी जो है वो घोड़े की तरह उसके सारा लगेज अपनी बैक पे रख के एंड देन ही इज़ ट्रैवलिंग, ठीक है, ही इज़ कैरिंग ऑल दी लगेज। बट इवन दो पोजो की तो आई साइड चली जाती है, स्टिल लकी इज़ लाइक mentally he is a slave of Pozo. So in reality Lucky तो भाग सकता है क्योंकि as Pozo lost his eyesight, but still therefore there's the theme of illusion of freedom, क्योंकि characters जो है freedom के लिए like ट्राई कर रहे होते हैं, but they do not get any freedom because mentally they are the slave of that particular scenario. So this marks the end of this video. Thank you so much for watching, and subscribe to my channel if you have liked this video. I'll be meeting you guys in the next video. Till then, take care.